अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आबिद शहजाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AIOU सॉल्यूशंस। आज एक अहम चीज़ 8609 का क्विज़, उसकी तैयारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी और यहाँ 100 अहम सवालात जो हैं वो मैं आपको जवाबात समेत जो है वो बताऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे सवालात आपको क्विज़ में से यहाँ से आएंगे, क्योंकि ये वही सवालात हैं जो इसी वीकेंड पे टेस्ट हुआ था, उसमें पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, द फिलोसोफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम taught लॉजिक एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन वाज। इसका दुरुस्त आंसर है एरिस्टोटल। दूसरा सवाल है, प्लेटो हेल्प टू ले डाउन फिलोसफिकल फाउंडेशंस rhetoric एंड लॉजिकल विजडम। इसका दुरुस्त जवाब है जी सुक्राट्स। तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। आइडियलिज्म फिलॉसफी जो है उसके नज़दीक इसका गोल ऑफ एजुकेशन है रियलाइजेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़। फोर्थ क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ रेलेवेंट पास्ट इवेंट्स contemporary events and their understanding should find a place in the teaching of history who maintained this principle। और रियलिस्ट्स जो हैं उनके नज़दीक ये प्रिंसिपल है। नंबर 5 है, विच philosophy stress the importance of addressing the needs and experiences of the whole child not just a child's intellect। और प्रोग्रेसिविज्म इसका दुरुस्त जवाब है। इन विच सोर्स ऑफ नॉलेज ह्यूमन फीलिंग्स प्ले ग्रेटर रोल। और इंचुएटिव एक सोर्स ऑफ नॉलेज भी होता है, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है ये है। 7 है, विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डील्स विद नॉलेज, इट्स स्ट्रक्चर, मेथड एंड वैलिडिटी। और एपिस्टेमोलॉजी ये ब्रांच है ऐसी जो नॉलेज, उसके स्ट्रक्चर और मेथड पर बात करती है, कि वैलिडिटी पर बात करती है। Obtaining knowledge that cannot be acquired either by inference or observation, by reason or experience। और ये है intuitive। A good tutor or indeed a good parent teach children value of। और इसका दुरुस्त जवाब है truth। एक अच्छा टीचर या वालिद जो होता है सच्चाई के मतलब अपने बच्चे को सिखाता है। Abu Hamid al-Ghazali was expert in fiqh and written a book name। हामिद अल-गज़ाली ने कौन सी किताब लिखी? अहियाउल उलूमुद्दीन, ये दुरुस्त जवाब है इसका। एरिस्टोटल disagreed from Plato with respect to that। इसका दुरुस्त जवाब है जी ideas are not real। The Dalton School founded by Helen Parkhurst in New York City in 1919। Pragmatism is a term derived from। और ये ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया गया है ये वर्ड। इसका दुरुस्त जवाब है प्रोग्रेसिव। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ करिकुलम इज रूटेड इन द प्रोग्रेसिव फिलोसफी। The Ministry of Professional and Technical Training was established in dash in the wake of 18th Amendment when Education Department was transferred from federal to provinces। 18वीं तरमीम के बाद की बात है। मिनिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कब इस्टेब्लिश की गई? और ये है 2011 में, अप्रैल मई में। Secondary education in Malaysia encompasses dash years। ये 5 years में होती है यानी कि secondary education। The dash of MDGs was to achieve universal primary education UPE and by 2015। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी the goal to of MDGs है Millennium Development Goals was to achieve universal primary education and by 2015। Which of the following is not the function of Directorate of Public Instructions
या schools. तो developing policies for government के लिए policies बनाना इनका काम नहीं होता. Involves the interpretation of measurement data. It makes sense of data collected on student performance. और ये इसका दुरुस्त जवाब है assessment. The dash is the stage of secondary education और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ये सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल के स्टूडेंट पर जाके वर्क करती है. द डैश हैज़ इट्स ओरिजिन इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेस एंजेस मॉन्टेसरी एकेडमी. बीकन हाउस स्कूल सिस्टम जो है इसका दुरुस्त जवाब है. द 18 अमेंडमेंट एक्ट डैश हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. ये 2010 में आया था, पहले भी ये इसका एक सवाल आ चुका ऊपर. द 6 मेजर कैटेगरीज ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन आर फ्रिक्वेंटली क्लस्टर्ड इनटू डैश ग्रुप्स. और ये इसके 3 ग्रुप्स होते हैं. विद स्पेशलिस्ट माइंड अ चाइल्ड कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड. दूसरा जवाब है इसका. विच ब्रांच ऑफ फिलासफी एग्जामिन्स इशूज परटेनिंग टू द नेचर ऑफ रियलिटी. और इसका दुरुस्त जवाब है मेटाफिजिक्स. According to dash, highest aim of education should be to strengthen individuality of a person. और ये कहना था अल्लामा इकबाल का. He was the wisest man of Athens, also caused the arousal of so many enemies around him. और ये Socrates के बारे में बयान है. Which philosophy's curriculum aims to create new spaces for meaning and understanding through phenomenological or post-structural investigations. दुरुस्त जवाब है इसका Deconstructionism. The philosophical attributes of Socratic are based on his idea. Knowledge can be arrived at through the use of reason or deductive reasoning is called rational. Source of knowledge में who said that teacher should consider the differences in ability and character among students. और ये कहना था अल-गज़ाली का. The philosopher who for the first time taught logic as a formal discipline was Aristotle. On what depends the value of an educational experience in the eyes of the idealists. इसका दुरुस्त जवाब है whether or not it preserves accepted institutions. Idealism rests on ideas of दुरुस्त जवाब है Plato. Which educational philosophy believes that the purpose of education is to prepare children to live in society, but that since society is in a constant state of change. और ये कहना है Progressivism. Which of the following is the source of knowledge? Sources of knowledge में intuition ये है source of knowledge. Aesthetic presentation of the universe is described by Herbart as inner freedom. According to Montessori, the most important period of life is from birth to age 6. सबसे अहम दौरानिया होता है ज़िंदगी का इनके नज़दीक. Pragmatism is a term derived from Greek word से. Aesthetic presentation of the universe is described by Herbart as inner freedom. On what depends the value of an educational experience in the eyes of the idealists? दुरुस्त जवाब है इसका the extent to which it satisfies people desires. Montessori believed that an adult environment is not suitable environment for children. Such environment is called prepared environment. डॉक्टर मारिया मोंटेसरी की बात होती है. All the natural objects are different forms of matter. आप जानते हैं matter. Stress that education should focus on the whole child rather than on the content or the teacher. Progressivism. The philosophical school founded by Derrida is called Deconstructionism. फॉर्बेल किंडरगार्टन बिलोंग टू किस मुल्क से हैं ये? और दुरुस्त जवाब है जर्मनी. अकॉर्डिंग टू इमाम अल-गज़ाली, चिल्ड्रन आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द
पेरेंट्स, वालदैन की जिम्मेदारी होते हैं उसके नज़दीक. द एंटायर वर्ल्ड इज़ fundamentally of the nature of spirit or mind, which accounts for its being called idealism. Dash emphasized that it is also aim of education to produce good leaders among children. ये कहना था अल-फराबी का. Project method of teaching is an outstanding contribution of, इसका दुरुस्त जवाब है progressivism. The aim of education is human perfection, stated by, किसने ये कहा? और ये है प्लेटो. Knowledge that God has disclosed to man is called, वो नॉलेज जो अल्लाह ताला ने इंसान पर ज़ाहिर किया है कहलाता है revealed. Dash emphasized that if children repeat the same mistake for the second time, parents should talk to them directly. ये कहा था अल-गज़ाली ने. Dash advised parents to send their children to school so that they can learn that is citation of Quran and understanding hadees. ये कहा अल-गज़ाली ने. Which philosophy believes that the nature of reality is subjective and lies within the individual. ये Existentialism दुरुस्त जवाब इसका. Which branch of philosophy examines issues pertaining to the nature of reality. और ये है इसका दुरुस्त जवाब मेटाफिजिक्स. ये ब्रांच है जो इससे डील करती है नेचर ऑफ रियलिटी से. रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय आइडियलिज्म. फिलॉसफी के हामी जो हैं वो रिलीजियस एजुकेशन को बहुत अहमियत देते हैं. द एम ऑफ आइडियलिज्म एजुकेशन इज फ्रीडम ऑफ चॉइस. दुरुस्त जवाब इसका. डैश एम्फसाइज दैट इट इज आल्सो एम ऑफ एजुकेशन टू प्रोड्यूस गुड लीडर्स अमंग चिल्ड्रन. अल-फराबी. शायद रिपीट हो गया ये सवाल. मॉडर्न एजुकेटर्स स्ट्रेस दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट थ्रू प्ले वे. पायनियर ऑफ दिस अप्रोच वाज फॉर्बल किंडरगार्टन. दुरुस्त जवाब है इसका. आइडियलिज्म इज अ स्कूल ऑफ फिलॉसफी. एक्सटेंशियल करिकुलम कंटेंट इज फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल्स एंड रिलेशनशिप्स. आप देख रहे हैं, नोट कर रहेंगे कि दुरुस्त जवाब जो है उसको बोल्ड किया हुआ. देखें ये 4 जवाब हैं, इनमें से ये गिफ्ट्स जो है ये बोल्ड है तो मीन्स ये दुरुस्त जवाब है. इन फॉर्बल्स थ्योरी प्रेजेंटेशन ऑफ सैम्बल्स आर कॉल्ड. ये गिफ्ट्स कहलाते हैं. फॉर्बल गार्डनर. डॉक्टर मारिया मोंटेसरी इंट्रोड्यूस्ड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. द फर्स्ट आया ऑफ द कुरान रिवील्ड is about the importance of knowledge. आप सब जानते हैं इकरा से शुरू हुई थी. According to dash children must learn Quran. Ibn-e-Miskaway. Which educational philosophy believes that the purpose of education is to prepare children to live in society, but that since society is in a constant state of change. Progressivism. दुरुस्त जवाब है इसका. Mind is absolute reality is the major belief of idealism. Essentialists stress on dash. Mental discipline पे stress करते हैं. Education was with the training for issue leisure, not for a livelihood for. ये ग्रीक्स के नज़दीक ये बात थी. Who said knowledge is virtue? Socrates ने कहा था. In which source of knowledge major focus is on evidence in search of conclusion. Rational. दुरुस्त जवाब है इसका. Progressivism believes that education comes from the experience of the child. दुरुस्त जवाब है A. Child. In which source of knowledge major focus is on evidence in search of a conclusion. तो दुरुस्त जवाब है इसका rational. What is the goal of education according to idealism? तो दुरुस्त जवाब है इसका cultivation of dynamic adaptable mind which will be resourceful and enterprising in all situations. The Dalton School, founded by Helen Parkhurst in the New York City in 1919, I think ये repeat हुआ सवाल. Which philosophy emphasizes on the study of great books? Perennialism. Al-Farabi was the first founder of dash which depends on demonstration and universal reason. दुरुस्त जवाब है इसका epistemology.
Knowledge derived from the written work, documentation and reports of others is called authoritative. For the all-around growth, child should be left on its own. Naturalism theory के according ये बात है. Knowledge derived from the written works, documentation ये 2 दफ़ा हो गया शायद, ऊपर भी आया था. Teacher in the kindergarten acts as a gardener. The realist aim of education is development of personality. With specialist mind, a child can explore the world. According to Plato, the process of education is never complete with the aim of education for human perfection. Which among the following human activity would a realist consider the most important? और इसका दूसरा जवाब है observing the environment. The traditional Greek moral theory held that there are 4 some virtues. 4 नेकियां होती हैं इन moral theory के मुताबिक. For a better life, students should be trained in democracy. Metaphysics deals with the nature of reality. The ultimate reality is the world of physical objects is a strong belief of realism. ऊपर वाले सवाल से related ही तकरीबन. Philosophy is achieving a wisdom that would influence the dash conduct of life. Idealism rests on ideas of Plato. Major educational aim of pragmatism related to a child is creating social efficacy. Which philosophy's curriculum aims to create new spaces for meaning and understanding through phenomenological or post-structural investigations? और Deconstructionism इसका दुरुस्त जवाब है. The philosopher who for the first time taught logic as a formal discipline was Aristotle. Play is a mirror of life, leads towards a self-discipline. दुरुस्त जवाब है इसका a self-discipline. Which of the knowledge is an attempt to discover a basis for our knowledge in sense experience? और इसका दुरुस्त जवाब है empirical. Knowledge can be applied to different areas like mathematical formula and have been applied to some great intellectual advances in sciences and the art. और इसका दुरुस्त जवाब है rational. Philosophy is achieving a wisdom that would influence the conduct of life. Realism is a philosophical approach that argues that ultimate reality is the world of physical objects. तो ये थे 100 सवाल, कुछ इनमें रिपीट भी हो गए. तो अगर इनको आप 1-2 दफ़ा देख लें तो आपको याद हो जाएंगे और आपका क्विज़ जो है वो बहुत आसान हो जाएगा आपको. अब तक के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.